Okay, assalamu alaikum everyone. We're starting now. So we were doing mechanics and we are done with most of the concepts that we need to know for our first topic, forces and equilibrium. It's main cheez rehti hai sir, friction. But apart from that, we're done with everything. So today we are going to do some practice questions from the worksheet that I gave you. I assigned some questions as well from that worksheet. You'll be telling me which questions you have issues in. What questions आज करेंगे, ठीक है? First पूरी रो कर लिए. Okay, so you should be able to do all of them now. First रो में तो 4-5 ही क्वेश्चन थे, उसमें से हमने 3 कर लिए थे क्लास में, तो कितने रह गए थे? आप ये कह रही हैं क्लास में हमने फर्स्ट रो कर लिए, क्लास में हमने फर्स्ट रो कर लिए, but you have to do the rest of them as well. Okay, yes. All right. So in the last session, we talked about different types of forces that we will be dealing with in this topic and throughout mechanics. First of all, we had weight of an object. Okay? Weight is defined like this: mass into gravity, and it acts perpendicularly. It always acts vertically downwards. Okay? That's one force that we have. Weight हमने discuss किया था. We talked about normal reaction force. It's a force that always acts perpendicular to a surface. And it's a reaction force. आप surface के ऊपर कोई force लग रही है तो surface उसका reaction देता है perpendicular to itself. जो surface की direction होती है उसके perpendicular आपकी force लगती है. This is the other force that we discussed. अगर inclined surface है तो you can see in the figure, for example, the direction of the reaction force is going to be perpendicular. और वेट जो है वो हमेशा वर्टिकली लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड. तो वेट और रिएक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शंस में होना हमेशा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? This was one. These were two forces that we talked about, and then we talked about tension. Tension is a force that a string applies on an object. So, for example, you have this string जिसके ऊपर एक बॉल, इसको एक बॉल के साथ टाई किया हुआ है, या बॉल एक स्ट्रिंग के साथ टाई की हुई है. If the ball is hanging in this position, एक तो उसका weight लग रहा होगा downwards, and there will also be tension acting on this, जो इसको counter कर रही होगी weight को to keep the ball in its position. Tension किस side पे लगेगी? यहाँ पे upwards direction में. So tension का एक तो आपको ये पता होना चाहिए, it's a force that a string applies on an object, and the second thing is it always acts away from whatever point you are considering. So अगर आप ball की बात कर रहे हैं, ball के perspective से it's acting upwards. अगर आप rod के perspective से देखेंगे तो rod के ऊपर नीचे को लग रही होगी. So whatever is your point of reference, उससे away लग रही होती है force. ठीक है? हमने tension देखी थी, ये discuss की. Then we talked about when tensions are going to be equal in a situation. अगर आपको multiple tensions आ रही हैं एक diagram के ऊपर, तो how do you figure out if those tensions are going to be equal or not equal? If you have a single string that is free to slide through the object, then you can have equal tensions. इसकी examples आपके पास क्या हो सकती हैं? You could have a string that's passing through a ring. That's one common example that you have to deal with. And then string passing over a pulley or a peg. इन दोनों cases के अंदर, these are the most common cases that you'll get. इन दोनों cases के अंदर आपकी tension pulley के दोनों sides के ऊपर और ring के दोनों sides के ऊपर आपकी tensions equal होंगी. ठीक है? We did some examples on this. If this condition is not met, या तो string single नहीं है, multiple strings है, in that case as well you have different tensions. या फिर single string है that is not free to slide through the object. इन दोनों cases के अंदर आपकी tension different होगी. So unequal tensions कब होंगी? You could have either a single string that's not free to slide through the object, उस पर कोई knot है, for example इस case के अंदर if you have a block और block के ऊपर वो knot एक है, तो it's not free to slide. Okay, आपकी string slide नहीं कर सकती through the block. इस केस के अंदर दोनों sides के ऊपर आप equal tensions assume नहीं करेंगे. Okay, they will be different. Or the other possibility is that you have two different strings. अगर different strings हैं तो उनमें तो कभी भी आप tension equal assume नहीं कर सकते. ठीक है?
डिफरेंट स्ट्रिंग में तो इट्स गोइंग टू बी प्रीटी ऑब्वियस, टेंशन डिफरेंट है. सिंगल स्ट्रिंग में आपको वो कंडीशन देखनी पड़ेगी whether it's free to slide through the object or not. If it is free to slide, it's equal. If the string is not free to slide through the object, it's not equal. The tension is not equal. Okay, yes, Rami. So if two strings are tied together, will we consider them two different strings? If two strings are tied together, then yeah, of course, there are two different strings. उनमें tension जो है वो different होगी. Okay, yes. So if there are two different strings, they still can have equal. They can have equal tension. By coincidence तो कुछ भी हो सकता है ना, तो वो उस केस के अंदर, स्पेसिफिक केस के अंदर उनकी इक्वल हो, बट इट्स नॉट समथिंग जनरल. तो आप एज्यूम नहीं कर सकते इक्वल टेंशन. हो सकता है आप कैलकुलेशन करें और एंड पे आपके पास सेम आ जाए. दैट्स पॉसिबल. Is that okay? Alright, so now today we are going to do some practice questions. How many of you attempted at least 3 questions from the second row? At least 3 questions from the second row. Isha is done with all of them? Is anyone done with all of them? Sir, Ramin and Isha? I was confused with one of them, but I attempted all of them. Okay, so that's what I want. You should have attempted. आपको तभी पता चलेगा कि आप किस चीज़ में कंफ्यूज हैं, right? Otherwise, you will not figure it. The first question from the second row. Okay, challenge. So let's try some of those questions then. Let me know if there were any problems in any of those questions, and we'll discuss करेंगे now one by one. G. 15, 1-5. Okay, इस पे आएंगे. We will discuss this. अभी के लिए नहीं, ये वाला क्वेश्चन अभी छोड़ते हैं. एक क्वेश्चन पे और करते हैं, उसके बाद इस पर आते हैं. 1. Okay, chalo, let's try 1. This is question number 1 from the worksheet. Let's start from this. Alright, so there's a light inextensible string that has its ends attached to two fixed points A and B. So you've got these 2 points A and B, and इस पे आप string के ends attached हैं. A is vertically above B, so it's like a vertical line here. A smooth ring R of mass 0.8 kilograms is threaded on the string and is pulled by a horizontal force of magnitude x newtons. Mass of the ring is 0.8 kilograms. Right side पे ये force लग रही है x newton. The sections AR and BR of the string make angles of 50 degrees and 20 degrees respectively with the horizontal. आपको angles diagram पे नजर आ रहे हैं. The ring rests in equilibrium. That means opposite forces are going to be equal. Horizontal forces be equal and vertical forces be equal. In the first part it says find the tension in the string. Vajiha and Anna, where are you coming from? Okay, can you say T1 and T2, their sum is equal to x? Can you say that? तो different angles पे लग रहे हैं ना? So that's what you're saying. T1 plus T2 का T1 और T2 का sum that equals x. That's what you're saying. उसके horizontal components are. Okay. अच्छा, before we actually even go there, are we going to have different tensions? How many of you think it's going to be equal tension on both sides? Can I raise your hands? Equal tension होगी दोनों sides के ऊपर? इस दोनों parts of string के अंदर? How many of you think it's going to be different? Okay, yes. G Iman, why is it different? Their horizontal components may be different because the angles are different, but I'm talking about the magnitudes of these forces. ये जो tension लग रही है, जिस पे direction लग रही है, is this tension going to be equal? इसका magnitude equal होएगा या नहीं होगा इन दोनों tensions?
सेम होगा? ईशा, वाई इज इट डिफरेंट? सेम नहीं होगा? क्यों सेम नहीं होगा? व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? What conditions have we done for the tension being equal or not equal? Sakina, why are we saying they're equal? Are आप कहीं नहीं equal? नहीं equal क्यों? I don't think the ring is free to move in this case. The ring is free to move in this case? I don't think it is. But I think it does. It matches the same string. अगर सेम स्ट्रिंग है, अगर दरम्यान में यहाँ पे रिंग की बजाय कोई ब्लॉक होता फिर तो नहीं इक्वल होती. बट इफ दिस इज अ रिंग, रिंग के थ्रू स्ट्रिंग इज फ्री टू मूव. अगर आप ये फोर्स लेट्स से थोड़ी सी ऊपर लगा देते हैं इस तरफ, तो रिंग ऊपर मूव करना शुरू कर देगी. रिंग के थ्रू स्ट्रिंग जा रही है ना, रिंग तो ऊपर मूव करना शुरू कर देगी. सो इट इज फ्री टू स्लाइड. उससे क्या फर्क पड़ेगा? बाकी सारी फोर्सेस तो जो भी हैं, हम सिर्फ टेंशन्स की बात करें. इज दिस फोर्स एंड दिस फोर्स आर दे गोइंग टू बी इक्वल और नॉट? दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. इट्स अ सिंगल स्ट्रिंग एंड इट्स पासिंग थ्रू अ रिंग, सो इट्स फ्री टू स्लाइड थ्रू दैट रिंग. दोनों कंडीशंस आपके मीट हो रही हैं, टेंशन दोनों साइड्स पे इक्वल होंगी. ओके, रिंग और पुली वाला केस तो आप याद रख लेना. जब भी रिंग होगी या पुली या पैग होगा, उस केस के अंदर तो टेंशन इक्वल होती हैं दोनों साइड्स पे. ये स्ट्रिंग है, ये दोनों पार्ट्स. यस, वो की फोर्स की डायरेक्शन है. अच्छा, नाउ लेट्स से यू आर कंफ्यूज्ड कि अच्छा ये इक्वल है या नहीं है. उसने क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी टेंशन की बात कर रहे हैं. इट्स ऑब्वियस फ्रॉम द क्वेश्चन स्टेटमेंट एज वेल, इट्स वन सिंगल टेंशन. अदरवाइज वो कहता कि फाइंड द टेंशन इन दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एंड दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग. वो दो डिफरेंट टेंशन पूछ रहा होता आपसे. उसने सिंगल एक, वैसे उसने सिर्फ ये कहा कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो देयर इज ओनली वन टेंशन. दैट मीन्स दोनों पार्ट्स के अंदर मैग्नीट्यूड सेम होगा उसका. तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से भी पता चल रहा होगा आपको इन मोस्ट केसेस. इज दैट ओके? All right, so let's think about all the forces applying on this ring now. There's one force acting to the right side, that's X. Tensions लग रही हैं string की वजह से. There's one tension in this direction, away from the ring. एक यहाँ पे लग रही है, let's call that T. एक यहाँ लग रही है, that is also T. Same tensions होंगी. Is there any other force? Any other force? Vertically downwards, there is weight of the object, which is 0.8 into 10, that's 8 न्यूटन. ये उसका वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है. मैथ्स में वी ऑलवेज यूज 10. उसने एग्जाम की उसमें लिखा होता है, इंस्ट्रक्शंस के अंदर ऊपर उसने लिखा होता है जी की वैल्यू 10 यूज़ करनी है. इवन दो इफ यू यूज 9.81 दे डोंट डिडक्ट मार्क्स फॉर दैट, बट यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. 10 यूज़ करने के लिए कहा होता है, तो आपने 10 ही यूज़ करनी है. ओके, ऑलराइट. सो दिस इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये सारी फोर्सेस हैं जो इस रिंग के ऊपर लग रही हैं. नाउ इट्स इन इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स लेफ्ट वाली फोर्सेस राइट वाली फोर्सेस के इक्वल होंगी, अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल होंगी. सो यू फर्स्ट हैव टू रिजॉल्व द फोर्सेस एंड देन इक्वेट ऑपोजिट फोर्सेस. वेट इज ऑलरेडी एक्टिंग वर्टिकली, इसके तो कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं है. एक्स भी राइट पे हॉरिजॉन्टल लग रही है, इसके भी कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं है. बाकी दोनों जो फोर्सेस हैं, टेंशन जो है, इनके कंपोनेंट्स आपको फाइंड करने हैं, वो फिगर आउट कर लेते हैं. Let's talk about this tension first. So there's one component acting in this direction, left side के ऊपर. एक इस तरह लग रहा होगा और एक ऊपर लग रहा होगा. What are their magnitudes? क्या लिखे हैं यहाँ पे? If this is 50, what about this angle? This is also 50. Alternate angles. अब एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T cos 50. एंगल के दूसरी साइड के ऊपर T sin 50. These are the components of the force that's acting in this direction. ये वाली टेंशन के ये दो कंपोनेंट्स हो गए. Let's think about the other tension.
जो नीचे की तरफ लग रही थी ये वाली, इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, वन टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड द अदर डाउनवर्ड्स. इनके मैग्नीट्यूड्स क्या हो जाएंगे? इफ दिस एंगल इज 20, if this angle is 20, this angle here is also 20, again alternate angles. एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? t cos 20, और नीचे वाला हो जाएगा t sin 20. This is t sin 20. ये आपने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया. Is that okay? Now you've got x acting towards the right side, t cos 50 acting towards the left side, t cos 20 acting towards the left side. ये horizontal forces है. Vertical forces are t sin 50, 8 and t sin 20. Left वाली forces right के equal, upward forces downward forces के equal, and then you can find any unknowns that you have to. So you say forces acting to the left side, they're equal to the forces acting towards the right side. Upward forces are equal to the downward forces. Why? Because we have equilibrium. जब equilibrium होता है तो opposite forces आपकी equal होती हैं. ठीक है? Left पे कौन सी forces लग रही हैं? t cos 50 and t cos 20. So we have t cos 50 plus t cos 20 equal to x, and upward force is t sin 50. T sin 50 equals t sin 20, which is the downward force, this one, plus 8. ये आपकी दो इक्वेशंस बन गए. Is this all right? ये हमने फोर्सेस रिजॉल्व किए हैं. ठीक है, उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स फिगर आउट कर लिए. देन यूजिंग दोज कंपोनेंट्स वी हैव रिटन डाउन दीज टू इक्वेशंस. लेफ्ट वाली फोर्स राइट वाली फोर्स के इक्वल, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल. Now we can solve them simultaneously. We'll find the values of t and x. उसने हमसे टेंशन पूछा है तो t आ जाएगा, x भी फाइंड करना है सेकेंड पार्ट में, उससे x, इसी से आपको x भी मिल जाएगा. ठीक है, सो t कौन सी इक्वेशन से आएगा? सेकेंड वाली इक्वेशन से आपको t मिल जाएगा. लेट्स सॉल्व दैट फर्स्ट. t sin 50, sin 50 क्या है? और लेट मी एक्चुअली जस्ट डू इट दिस वे ताकि एक्यूरेट वैल्यू आ जाए. t sin 50 आप इसको इवैल्यूएट करके लिख भी सकते हैं डेसिमल्स में. इफ़ यू डू दैट मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ कर रहे हो अगर आप डेसिमल्स में sin 50 को लिखते हैं तो. अदरवाइज यू कैन जस्ट write it like this: t sin 50 minus t sin 20 equals 8. Then take t common. That gives you sin 50 minus sin 20. And then take sin 50 minus sin 20 to the other side. That gives you 8 over sin 50 minus sin 20. Now evaluate this directly from a calculator. 18.87. Or we can say this is 18.9 Newton. This is the value of t that we were looking for. Is this all right? This was the first part. Second part में वो कहता है find the value of x. अब x figure out करना है. दूसरी इक्वेशन यूज कर लें, इससे आपको x मिल जाएगा. x equals t cos 50, so that's 18.87 cos 50 plus 18.87 cos 20. Evaluate this, you'll get the value of x. 29.86, which is 29.9 Newton. This is the value of x as well. So this was 6 marks in total, 3 marks for each of those parts. ये करना था आपको इसमें. Any problems? No? ठीक है. All right, let's do another one.
Let's try question number 2 as well. ये देखते हैं. Can everyone please take out your worksheets? आप अपने सामने रखें. Question number 2, yes. Worksheets please निकाल लें सब लोग. You should have the question in front of you all at all times. Yes. Fahim, you have extra copies? Anyone who needs copies of the worksheet, print of the worksheet? अभी नहीं. अच्छा है आपके पास? एंड पे क्लास के एंड पे वापस करते हैं, ठीक है? ग्रुप 3 में किसी को चाहिए होगी. Everyone else has a printed copy of the worksheet? सबके पास है यार? अभी नहीं है? एक्स्ट्रा है आपके पास? आपके अपने पास है? Alright, let's have a look at this. Question number 2 from the worksheet. There's a small block of weight 18 Newton that is held at rest. Again, rest का मतलब है equilibrium के अंदर है. On a smooth plane inclined at 30 degrees to the horizontal by a force of magnitude P Newton, ये P Newton force लग रही है. Find the value of P when the force is parallel to the plane as in figure 1. So there are two different cases actually. Figure 1 में इस तरह से force लग रही है और figure 2 में आपकी force इस तरह लग रही है. Directions different है, दोनों cases में आपको P की value figure out करनी है. ठीक है? So how do we think about this? First of all, we have to think about all the forces that are acting on this block. कौन कौन सी forces लगी हैं? Weight 18 Newton उसका weight है, कहाँ पे लगेगा? Vertically downward. So this is one force. 18 Newton, that's the weight of the object. What else? वेट के कंपोनेंट्स बना लेंगे, ठीक है, लेकिन फोर्स इसके अलावा कोई और फोर्स लग रही है आपको? टेंशन यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ तो नहीं है. टेंशन तब होती है जब कोई स्ट्रेंथ होती है. रिएक्शन फोर्स. देयर इज अ सरफेस जब भी होता है तो रिएक्शन होता है. रिएक्शन कहाँ पे लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. दैट्स गोइंग टू बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. ये आपकी एक और फोर्स है जो यहाँ पे लग रही है, रिएक्शन. ठीक है? These are all the forces that you have. Now P is already along the plane. अब remember ये inclined plane है. Inclined plane में आप क्या करते हो? Forces को किस तरह से resolve करते हो? Along the plane, parallel to the plane and perpendicular to the plane. इन दो directions में आपने resolve करना है. Perpendicular and parallel. P is already parallel. R is already perpendicular. Only weight is acting in a different direction. तो weight को आप resolve कर लेंगे. वेट के कंपोनेंट्स वगैरह आउट कर लें. अच्छा, वेट के क्या होंगे? एक तो इस डायरेक्शन में होएगा, अलॉन्ग द प्लेन, इस पैरेलल टू प्लेन इस साइड पर आ रहा होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन आपका इस डायरेक्शन में आ रहा होगा. हाउ डू यू फिगर आउट कि इनके कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ क्या होंगी? अच्छा, एक चीज़ ना ये आपको बहुत काम आएगी अगर मैकेनिक्स में, इसको याद कर लें एक चीज़. Whenever you have the angle of a plane given like this, 30 degrees पे angle है, 30 degrees पे inclined है आपका plane. Along the plane वाले component के अंदर ना हमेशा उसका sign लगता है. Along the plane हमेशा angle of plane का sign वहाँ पर आता है और perpendicular to plane you always have its cos. 18 sin 30 along the plane, 18 cos 30 perpendicular to the plane. This is always going to be the case whenever you have the angle of inclination of a plane given. ठीक है? कैसे figure out कर सकते हैं? If this angle is 30, this angle is 60, and if this is 60, this is 30. वही करें ना, ये 30 है, ये 30, ये भी 30 होएगा. अच्छा, आप हॉरिजॉन्टल लाइन कह रही हैं?
ये लाइन बना दें, ये एंगल 30 होएगा। ये कर लिया इस साइड पे। अच्छा, इस साइड के ऊपर ये 30 होएगा। लेकिन फोर्स तो नीचे लग रही है, तो वो वाला 30 तो फोर्स के साथ आ ही नहीं रहा। यहाँ से बेसिकली ये यहाँ से आ रहा है। इफ दिस इज 30, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60, राइट? क्योंकि ये 90 है यहाँ पे। इफ दैट इज 60, ये टोटल भी 90 है क्योंकि एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल है, तो 90 में से 60 माइनस किया, ये एंगल आपका 30 हो गया। अब उस 30 के परस्पेक्टिव से हम इसके कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज, इफ यू आर गिवन समथिंग लाइक दिस, इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह से, और ये आपकी फोर्सेस लग रही हैं कोई इस तरह से, वर्टिकल कोई फोर्स लग रही है, वेट है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। Why? Because if this is theta, this is 90 minus theta. And if that's 90 minus theta, 90 में से 90 minus theta आप minus करते हैं, you end up with theta. So this is important. ये बहुत आपको ज़्यादा frequently use करना पड़ता है. If this angle is theta, this angle here is also theta. Does this make sense? So if we have 30 degrees here, if this is 30, we know that this is also going to be 30. और उसके आपने उसके perspective से आपने ये दो components बना लिए. This is 18 cos 30, the component that is adjacent to the angle, and the component that's on the other side of the angle, that is 18 sin 30. Clear है सबको? अच्छा, अब अपने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया. नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड एंड अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. बट यहाँ पे अगेन वी हैव अ प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन में अब लेफ्ट राइट डायरेक्शन और अपवर्ड्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन ना कैसे देखनी है आपने, ये एक दफ़ा देख लें, बिकॉज अगेन इट्स गोइंग टू कम अगेन एंड अगेन. आपके पास अगर इस तरह का कोई सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस, अब हमने करना ये है कि अलोंग द प्लेन ऑपोजिट फोर्सेस को इक्वेट करना है और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑपोजिट फोर्सेस को इक्वेट करना है. ठीक है, तो अगर आप उसी तरह यूज़ करना चाहें, लेफ्ट वाली फोर्स राइट वाले के इक्वल, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल, लेफ्ट राइट डायरेक्शंस आप किस तरह से डिटरमिन करेंगे. थिंक अबाउट समबडी स्टैंडिंग ऑन दैट प्लेन. उस प्लेन पे खड़े होकर आप देखें, उस प्लेन के परस्पेक्टिव से व्हाट्स द राइट साइड. प्लेन के परस्पेक्टिव से राइट साइड क्या है? दिस इज द राइट साइड, राइट, ऊपर वाली साइड पर. प्लेन पे खड़े होकर लेफ्ट साइड क्या है? दिस इज द लेफ्ट साइड. अपवर्ड्स अकॉर्डिंग टू द प्लेन इज दिस एंड दिस इज डाउनवर्ड्स. तो प्लेन के परस्पेक्टिव से सोचें, व्हाट इज योर लेफ्ट साइड, व्हाट्स योर राइट साइड, व्हाट्स अपवर्ड्स एंड व्हाट्स डाउनवर्ड्स. ठीक है, because it's not horizontal and vertical anymore, inclined है, तो प्लेन के परस्पेक्टिव से आपने इस तरह सोचना. और जब आप इस तरह कर लेंगे तो उसी तरह आपने करना है, लेफ्ट वाली फोर्स राइट वाली फोर्स के इक्वल, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल, ऑपोजिट फोर्सेस को इक्वेट करें एसेंशियली. ठीक है, सो इन दिस केस you have this force that's upwards, this is downwards, this is right, and this is left. Upwards, एक मिनट, upward force कौन सी R, downward is 18 cos 30, प्लेन के perspective से right, this is upwards and downwards. Left पे कौन सी लग रही है? 18 sin 30. राइट पे कौन सी लग रही है? P. अच्छा, अब यहाँ पे although it's not necessary, but I prefer representing forces such that जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है वहाँ से स्टार्ट हो रही है. कंफ्यूजन कम होगी उस तरह से, बिकॉज यहाँ पे देखें, ये ब्लॉक यहाँ पे राइट पे आपको कोई फोर्स नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, ऑल्दो P इज एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट साइड. सो व्हेन यू आर ड्राइंग डायग्राम्स या कोई डायग्राम पे ऑलरेडी उसने कुछ रिप्रेजेंट किया हुआ है,
It's going to be easier if we just remove this force and actually represent it on this side. आपकी confusion जो है वो कम होएगी. This is actually P Newton. को right side पे लग रही है तो उसको आप right पे represent कर दें rather than representing it on the left side. It doesn't make any difference, right? It's a vector, तो left से उठा के right पे रख दें. सिर्फ इसलिए कि जब आप उसको right forces देख रहे हो तो आपको नज़र आ रहा हो कि ये वाली force right पे लग रही है. आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि P भी लेफ्ट पर आ रहा है, 18 sin 30 भी लेफ्ट पर आ रहा है ब्लॉक के, तो दोनों लेफ्ट पे नहीं लग रही. P आपका राइट पे लग रहा है. जिस साइड पे फोर्स लग रही है उसको उसी साइड पे रिप्रेजेंट कर दें. इट्स गोइंग टू बी ईजियर टू थिंक अबाउट. ओके, बट इट्स ऑप्शनल ऑफ कोर्स, आपकी चॉइस है. इट्स जस्ट गोइंग टू सेव यू फ्रॉम कंफ्यूजन समटाइम्स. अच्छा, अब क्या करना है? ऑपोजिट फोर्सेस को इक्वेट करना है. सो देयर वाज अ क्वेश्चन समवेयर. कुछ कह रहा था ये सही बात. स्मूथ प्लेन मीन्स देयर इज नो फ्रिक्शन. जब स्मूथ लिखा हुआ है इसका मतलब है फ्रिक्शन नहीं है. When they say smooth, smooth means it's a frictionless surface. Then they either say it's a rough surface, then you have friction. If they don't specify anything, then they will somewhere talk about friction. तो जब उन्होंने friction की बात की है कहीं पे तो इसका मतलब एक friction है उसका. Okay. जब फ्रिक्शन नहीं कंसिडर करनी तो वो आपको बताएंगे कि ये स्मूथ प्लेन है. ऑलराइट, स्मूथ प्लेन का मतलब होता है देयर इज नो फ्रिक्शन. लेकिन अभी हमने फ्रिक्शन डिस्कस नहीं किया तो हम देखेंगे बाद में इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. अभी के लिए व्हाट वी डू, वी जस्ट इक्वेट ऑपोजिट फोर्सेस. तो हम दो डायरेक्शंस देख रहे हैं एसेंशली. वन डायरेक्शन इज पैरेलल टू द सरफेस. दिस इज वन डायरेक्शन, parallel to surface, and the other direction is perpendicular to the surface. These are the two directions that we have. ठीक है. Parallel to surface आपके पास क्या है? Left वाली force और right वाली force. तो you say the forces acting towards the left side, they are equal to the forces acting towards the right side. Left पे कौन सी force लग रही है? 18 sin 30. और राइट पे क्या लग रहा है? P. Perpendicular to surface, upwards force is equal to the downward force according to that figure. Upward force is R and the downward force is 18 cos 30. ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई. Since the object was in equilibrium, opposite forces are going to be equal. Now what do we have to figure out? उसने क्या, find the value of P. P तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा, तो इसमें एक्चुअली सेकंड इक्वेशन की आपको ज़रूरत भी नहीं है. अगर उसने R भी पूछा होता, रिएक्शन फोर्स पूछी होती, then you would have written this down as well. लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ P की वैल्यू फिगर आउट करने के लिए कहा है, वो तो आपको फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा. That's 9 Newton. Is this okay? Vajiha, any questions? Maham? Okay, चलें, let's do the second part. Second part देखते हैं. Now in the second part says find the value of P when the force is horizontal as in figure 2. अब second figure वाला केस है आपके पास, the force is horizontal. इस तरह से horizontal force लगी. ठीक है, that's the only difference between this part and the first part. Again, you can represent the forces. There is weight of the object acting downwards. This is 18 Newton. इसके components उसी तरह से बनेंगे. एक component यहाँ पे which is 18 cos 30. And the other one is going to be in this direction, that is 18 sin 30. Let's see. We might not. Let's figure out. Because we're just representing all the forces, and then we'll see. Reaction. So we still have reaction. That's perpendicular to the surface. तो वो वाली forces उसी तरह लग रही हैं, सब पहले लग रही थी.
Now we have to resolve this force P. How do you resolve this force P? Yes. Do we say that P is a resultant of R and A is P is the resultant of? R and A is No. What about 18 cos 30? So we'll find R and then we'll use R and A is So it's basically, yeah. Sorry? It's like वो जो हम बनाते हैं इसलिए ऐसा इसलिए I guess she's saying It's not resultant. आप resultant तो यहाँ पे वैसे भी ज़ीरो होएगा ना. अच्छा, P के components निकाल लें. P is not acting along the plane or perpendicular to plane anymore. How do you resolve P? Yes, Saliha? Again, as I said before, it's better to represent forces on the side to which on which they're applying. P किस साइड पे लग रहा है? राइट साइड के ऊपर. तो P फोर्स आप राइट पे रिप्रेजेंट कर दें. इट्स गोइंग टू बी ईजियर टू थिंक अबाउट. ये आपकी फोर्स P यहाँ पे लग रही है इस तरह से. ठीक है. So rather than representing it here, represent it on the other side. It's going to make it easier to think about. Now, do we know any angles for P? If this is 30, sorry, if this angle is 30, what about this angle? This is also 30 because they're corresponding angles. Horizontal lines है ना, this line is horizontal, this is also horizontal. एक line pass करिए, उसके angle दोनों के साथ same बनेगा. So it's also 30 degrees. And now using this angle, you can resolve the force P. One component of P is going to be acting in this direction, which is P what? Cos 30, angle के साथ वाली side है, right? उस पे cos लगेगा, angle के दूसरी side के ऊपर you have sine. These are the components of the force P that we have now. We've got some forces along the plane now, P cos 30, 18 sin 30, and some perpendicular to plane or P sin 30 and 18 cos 30. ये आपके पास forces लग रही हैं. उसी तरह से this is upwards, right? This is right. This is down, and this is left. R is not going to be the same because पहले R के opposite सिर्फ 18 cos 30 लग रहा था. अब R के opposite P sin 30 भी आ गया 18 cos 30 के साथ साथ. So R is going to change here. आपने P find करना है, right? Question में क्या लिखा हुआ है उसमें? You have to find the value of P. Now since we have equilibrium, opposite forces equal होंगे. लेफ्ट वाली फोर्स राइट वाली के इक्वल, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल. आपको P चाहिए, P तो आपको यहीं से मिल जाएगा. P cos 30 और 18 sin 30 को इक्वेट करेंगे, उससे आपके पास P आ जाएगा. अगर आपको R भी फिगर आउट करना होता उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते थे. P की वैल्यू इसमें डाल देते और आपके पास R आ जाता वहाँ से. ठीक है. सो अगेन लेट्स डू दैट. हम फिर से क्या कर रहे हैं? लेफ्ट वाली फोर्सेस राइट वाली फोर्सेस के इक्वल, upwards forces downward forces के equal. That's all we are doing here. You can just copy this diagram. ओके, लेफ्ट पे फोर्सेस कौन सी लग रही हैं? लेफ्ट पे यू हैव 18 sin 30, राइट पे यू हैव P cos 30. नाउ दिस इक्वेशन ओनली हैज P इन इट, ओनली अननोन इज P. यहाँ से आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली. अगर इसके अंदर कोई और अननोन भी होता तो हो सकता था आपको साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती और आपको दूसरी इक्वेशन भी लिखनी पड़ती. लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ क्योंकि P की वैल्यू चाहिए, वो इसी इक्वेशन से आपके पास आ जाएगी. दूसरी इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अगर आपको R भी चाहिए होता तो आप दूसरी इक्वेशन भी लिख देते.
that would have been R equal to, R is the force that's acting upwards, that equals to the downward forces, which are P sine 30 and 18 cos 30. लेकिन क्योंकि आपको P चाहिए सिर्फ, वो फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगा, सो इस केस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ये आपको नहीं चाहिए. Alright? Otherwise, you'll see in 95% of the cases, we'll be using both equations. ठीक है? It's a very simple example, तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक यूज़ करके रिजल्ट्स मिल गए हैं. 18 sin 30 is 9, so you have P into square root of 3 over 2, and that's going to give you the value of P, which is 6. So you can write this in decimals, 10.39, so this is 10.4 Newton. ये आपके पास P की वैल्यू है, ये फिगर आउट करनी थी. Is this okay? Any questions? No? Let's have a short break and then we resume after that. Okay, so we have a 5-minute break that has started now. Yes, Fatma. Abhi पूछ लेना. So we have a break right now, okay? Yes, Fatma. इस केस के अंदर आप कह रही हैं कि R को रिजॉल्व कर लें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस के अंदर. Yes, you could do that. You could do that. इस केस के अंदर yes. But I will not want to confuse everybody because in most cases आप यही कर रहे होंगे कि आप पैरेलल टू प्लेन रिजॉल्व करेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन रिजॉल्व. अदरवाइज तो आप किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं ना, वो तो मसला नहीं होता. But it's easier that way mostly. आयमा वसीम, अमीलिया नवाज, आमना एतजाज़, आमना बतूल, अरीमा आमिर, अरीशा सलीम, ईशा आसिफ, ईशा आसिफ is not here. ईशा सैयद, इमाम मोहसिन, फ़हीम ज़ुबैर, फ़ातिमा नमान BF, फ़ातिमा उमर, फ़ातिमा उस्मान, खदीजा बिनते मुबश्शिर, खदीजा साकिब, खुशनूर फ़ातिमा, माहम गुलजार, मलिहा फैसल. Momina Margoob is here. Natalia Salahuddin, Noor, Pakiza Fatima, Ramin Rafiq, Sakina Batul, Saliha, Faza, Wajiha, and Iman Arshad Orange. Leave for? Okay. ये आपकी अक्टूबर रिपोर्ट में अभी नहीं आएगी, अभी आपकी एब्सेंस लगी होगी. ठीक है, परसेंटेज वो नेक्स्ट बाद में अपडेट हो जाएगी.
If it's very short, yes. All right, we're resuming. Question number 15. Let's do this. Question number 15. हो गया 5 मिनट ज़्यादा हो गया 28 की ब्रेक स्टार्ट हुई थी इट्स 34 नाउ तो हमने स्टार्ट राउंड से नहीं किया था ना The diagram shows 3 particles. This is question number 15 from the worksheet 1-5. Let's do this. The diagram shows 3 particles A, B and C hanging freely in equilibrium. Again we've got equilibrium, each being attached to the end of a string. Okay, so we have this particle and this particle. All of them are attached to the end of a string. Okay, so that means there are 3 different strings. The other ends of the 3 strings, there are 3 strings in total, are tied together at the point X. So point X पे they are all tied together. So point X से एक string नीचे, एक right पे एक left पे. So this is one string. This is another string. And this is another string. ये 3 आपके पास strings हैं. ठीक है. The strings carrying A and C, they pass over smooth fixed horizontal pegs P1 and P2 respectively. So इसको उसने P1 कहा है, इसको P2 कहा है. The weights are given. Weights of the particles, they are 5.5, 7.3 and W. And the angle P1x P2, which is this angle is 90 degrees. We have to find this angle AP1x, so that's this angle. ये angle figure out करना है, let's call this theta. We want to figure out this angle. And the value of W is the weight of particle C. इसका weight figure out करना है. ठीक है? Weight को represent कर लेते हैं पहले. Weight of A is 5.5 Newton. That is here. This is 5.5. Weight of B is 7.3. And weight of C is W. ये आपके तीनों के weights हैं. And the whole system is in equilibrium. We need to find the value of W and this angle, that's theta. ये दोनों figure out करना. How do we start? सबसे पहले क्या करेंगे? Resolve. उससे भी पहले we need to represent what forces are there. कौन से forces हैं? Let's start from one side. किसी एक particle से start कर लें. Let's say we start from the particle A. Okay. A के ऊपर कौन से forces लग रही हैं? एक तो weight है नीचे 5.5, that's already there. The other force is tension. Tension is acting upwards. इसको हम यहाँ पे P1 इसने कहा है पुली को, peg को, तो इसको हम T1 कह देते हैं. This is the first tension. Is there any other force acting on A? There's no other force. That means T1 की value क्या होनी चाहिए? It should be 5.5. A equilibrium में है ना? Opposite forces equal होंगी. If downward force is 5.5, this is going to be 5.5 as well. इसकी value 5.5. Make sense? Now if this force is T1, if this tension is T1, what about the tension on the other side? What is that? किसके ऊपर से पास कर रहा है? Peg के ऊपर से पास कर रही है string. This is all one string. Yellow वाला part ये single string है. Peg के ऊपर से पास कर रहा है. दोनों sides पे tension equal होंगी. दोनों sides पे tension equal होंगी, right? The string is free to slide through the peg, over the peg. उसके ऊपर से slide कर सकती है. जब भी आपके पास peg आ गया या pulley आ गई या ring आ गई, दोनों sides पे tension उसके equal होंगी. So if this is T1, this is also T1. जो x के ऊपर लग रही है tension उस direction के अंदर, that's also T1. उसकी value आपको पता है? That's 5.5 Newton. You can write that here. This is 5.5 Newton.
ठीक है, लेट्स थिंक अबाउट पार्टिकल बी नाउ. बी के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? वेट एंड टेंशन, राइट? वेट नीचे लग रहा है 7.3, अपवर्ड्स टेंशन लगेगी. लेट्स कॉल दिस टी. अच्छा, उसने इसको T2 का हुआ, इसको T3 कह देते हैं. फिर ये T3, इसकी वैल्यू कितनी है? 7.3. इस साइड पे तो 7.3 ऊपर को लग रही है. इफ यू थिंक अबाउट एक्स के ऊपर कहाँ पे लग रही है फोर्स? टेंशन. एक्स के ऊपर टेंशन नीचे पे लगेगी, अवे फ्रॉम एक्स, राइट? So if we think from the perspective of x, the tension is in this direction, and that tension is also T3, which इसकी magnitude कितना है? This is 7.3 Newton. So this is the downward force acting on the point x. Let's think about particle C now. किनका sum 7.3? देखें बी, एक हम देखें पहले बी के पर्सपेक्टिव से. देखा बी के पर्सपेक्टिव से, बी का वेट नीचे लग रहा है 7.3, बी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर टेंशन भी उतनी लगेगी ऊपर की तरफ 7.3. अगर हम एक्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एक्स के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, वही सेम स्ट्रिंग की फोर्स लगा रही है, तो जितनी टेंशन वो दूसरी साइड पे लगा रही है उतनी ही यहाँ पे लगा रही है. दैट्स एसेंशियली द वेट ऑफ बी. यस, इज दिस ऑल राइट? थिंक अबाउट पार्टिकल सी. पार्टिकल सी के ऊपर वेट लग रहा है नीचे को W, टेंशन ऊपर को लगेगी, दैट्स T2. इसकी वैल्यू कितनी है? W न्यूटन. अब इस साइड पे T2 लग रहा है तो दूसरी साइड पे भी कितना लगेगा? T2, बिकॉज इट्स द सेम स्ट्रिंग. दिस होल स्ट्रिंग इज अ सिंगल स्ट्रिंग एंड इट्स पासिंग ओवर अ पेग. दोनों साइड्स पे इक्वल टेंशंस होंगी, तो यहाँ पे भी आपकी फोर्स कितनी होगी? T2. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज W न्यूटन. यस, इस केस में वेट है, बट इन जनरल वॉट एवर इज द टेंशन ऑन वन साइड, दैट्स द टेंशन ऑन द अदर साइड. तो यहाँ पे टेंशन वेट के इक्वल थी, इसलिए हमने उसको डायरेक्शन डजंट मैटर. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द स्ट्रिंग फ्री टू स्लाइड और नॉट. दैट्स व्हाट मैटर्स. ठीक है, ये आपके पास सारी फोर्सेस आ गई. अब ये सारी फोर्सेस आके किस पॉइंट पे कंबाइन हो रही हैं? पॉइंट x के ऊपर. तो अब x के ऊपर देख लें कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं. नाउ लेट्स एक्चुअली रिप्रेजेंट दैट सेपरेटली जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट बेटर. यू गॉट दिस पॉइंट x. एट द पॉइंट x यू गॉट वन फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. दिस इज T1. इसकी वैल्यू कितनी थी? 5.5 न्यूटन. एक ये फोर्स लग रही है. देयर इज अनदर फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. दिस इज T2, जिसकी मैग्नीट्यूड कितना है? W. And we have a right angle between these two forces. And there's another force that's acting downwards, which is 7.3. ये आपकी थर्ड फोर्स लग रही है 7.3 न्यूटन. ये तीन फोर्सेस हैं. अब एक तो आपको W की वैल्यू फिगर आउट करनी है, और दूसरा आपको फिगर आउट करना है ये वाला एंगल. This angle is theta. This is the other thing that we have to figure out. Theta और W की वैल्यू फिगर आउट करनी है. What are we given? We are given that this point X is also in equilibrium. पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना, तो X भी इक्विलिब्रियम के अंदर है. तो X के ऊपर जो सारी फोर्सेस लग रही हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं सारी. तो X के ऊपर आपने इक्विलिब्रियम वाला केस अप्लाई कर दें. ठीक है. So what we'll do is we'll just equate the forces acting towards the left side to the right, to the forces acting to the right side, upward forces पे downward forces से equate कर देंगे, and you'll get your result from that. Okay? अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? Forces को represent कर दिया हमने, उसके बाद we have to resolve the forces. 7.3 is acting downwards, उसको तो resolve करने की जरूरत नहीं है, वो vertically लग रहा है. Resolve आपको क्या करना है? W करना है और 5.5 करना है. W के कंपोनेंट्स निकाल लें. वन कंपोनेंट एक्टिंग टू द राइट साइड, वन एक्टिंग अपवर्ड्स. और X 5.5 के कंपोनेंट्स कहाँ पे लगेंगे? एक आपका लग रहा होगा लेफ्ट साइड के ऊपर,
और दूसरा अपवर्ड्स। ये आपके दोनों कंपोनेंट्स होंगे। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द कंपोनेंट्स यू नीड एंगल्स एट दिस पॉइंट। जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रही है फोर्स, उस पॉइंट पे आपको एंगल्स फिगर आउट करने हैं कोई। नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा, कैन वी नो एनी वन ऑफ दीज एंगल्स? इनमें सब कोई एक एंगल पता चल सकता है इस एंगल से? दिस एंगल is also theta. Alternate angles, right? This angle is going to be theta. What else? This angle? This is 90 minus theta. Why? Because हमें ये पता था कि ये वाला एंगल W और 5.5 वाली फोर्स के दरम्यान 90 बन रहा है टोटल। तो बाकी अगर वो थीटा है तो बाकी कितना बचा? 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा अगर आप कैलकुलेशंस में आके यूज़ करेंगे ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी उसके अंदर, अनलेस यू नो सम ट्रिग्नोमेट्री और आप यूज़ कर सकें। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आ जाएगा कंपोनेंट्स के अंदर, और आपके पास कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा आ जाएगा। फिर भी आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस थीटा के अंदर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन थीटा के अंदर। यू कैन डू दैट इफ यू वांट, दैट्स ओके। yes, so but rather than doing that and making it more complicated, if this is 90 minus theta, we can say this angle is theta, right? Because ये total angle ये वाला भी 90 बन रहा है, right? एक horizontal एक perpendicular है, तो total 90 होगा। 90 में से आप 90 minus theta minus कर दें, that gives you theta. So this angle is also theta. Rather than using 90 minus theta in your calculations, it's going to complicate things. Use theta. Is that okay? Yes. नहीं डिस्टेंस नहीं, वो बस दो फोर्सेस है ना वहाँ पर, दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए, अदरवाइज सेम लाइन। यस, ऑलराइट। सो ये आपके पास एंगल्स आ गए, एक एंगल थीटा आ गया, एक वॉल एंगल थीटा आ गया। नाउ लेट्स रिजॉल्व द कंपोनेंट्स। लेट्स बी वर्किंग 5.5 के कंपोनेंट्स, एंगल के साथ वाला क्या आएगा? cos, so this is 5.5 cos theta, और लेफ्ट साइड पे यू हैव 5.5 sin theta. W के कंपोनेंट्स, एंगल के साथ वाला is W cos theta, एंगल के दूसरे साइड वाला W sin theta. इसके लिए रिमेंबर ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं हम, दिस इज एंगल थीटा दैट वी यूजिंग फॉर दिस। मेक सेंस? Now we have forces resolved. Right पे एक ये लग रही है, left पे ये लग रही है. Upwards forces are 5.5 cos theta and W sin theta, and downward forces 7.3. Again, all we have to do is we say forces acting towards the left side are equal to the forces acting to the right side, and इस तरह से upward forces are equal to the downward forces. ये आप यहाँ पे यूज कर लें. Leftward forces are equal to the rightward forces, upward forces are equal to the downward forces. Just input values now. 5.5 sin theta equals W cos theta, and the other equation that we have is 5.5 cos theta plus W sin theta equals 7.3. You've got these two equations, solve them simultaneously, you will get the values of W and theta. ठीक है? इसके बाद हो सकता है simultaneously solve कर सकते हैं इनको, राइट? सब्स्टिट्यूशन कर लें, किसी भी एक इक्वेशन से W को सब्जेक्ट बना दें, दूसरे में जाके इनपुट कर दें. So for instance, if I were to make W the subject from this equation, this gives me 5.5 sin theta over cos theta, which becomes tan. या तो आप tan में कन्वर्ट कर लें इसको, या दूसरी इक्वेशन में tan तो नहीं आ रहा, उसको एज इट इज इनपुट कर दें if you want. This gives you 5.5 cos theta plus 5.5 sin theta over cos theta. W की ये वैल्यू है, into sin theta equals 7.3. Now you've got an equation that only has theta in it. इसको सॉल्व कर लें, cos theta से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन को. That gives you 5.5 cos square theta plus 5.5
sine square theta, that equals 7.3 cos theta. Now cos square plus sine square, that's 1. So 5.5 ka common le lein, you're left with cos square theta plus sine square theta. That equals 7.3 cos theta. And that is 5.5 into 1 divided by 7.3. So you've got cos theta equal to this. You'll get the value of theta from here. What's that? 41.11 degrees. इसको आप लिख सकते हैं 41.1. लेकिन जब वहाँ पे इनपुट करेंगे दूसरी इक्वेशन के अंदर, it should be using more accurate value. W equals 5.5. इसको tan में कर दें बेशक, ऐसी के अंदर डायरेक्टली इनपुट कर दें, that's your choice. 1.41.1 divided by cos of 41.1, या फिर tan 41.1 कर दें डायरेक्टली. What do we get from this? 4.8? Exactly 4.8? Okay, so you get 4.8 Newton from this. This is the value of W. ये दोनों आपको फिगर आउट करने थे, W and theta. So क्या किया आपने? रिजॉल्व किया फोर्सेस को, पहले सारी फोर्सेस रिप्रेजेंट कर ली, रिजॉल्व कर लिया. अपवर्ड फोर्सेस इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट वाली फोर्स राइट के इक्वल. Alright? There's another question that's very similar to this in the worksheet. Make sure that you try that by the next class. कल इंशाल्लाह हम फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे, and then we should be done with this topic in terms of concepts. लेकिन इसके प्रैक्टिस में भी और टाइम लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज मोस्टली हमारा कल खत्म हो जाएगा. ये वाली वर्कशीट तो बस खत्म होगी ना, ये सारी हो जाएगी, इसमें फ्रिक्शन नहीं है इस वाली वर्कशीट का. ऑलराइट, ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन.